स्टार्ट हो जाता था। नहीं सर, वो घी डालने के बाद है ना, यहाँ से स्ट्रीम को ऑन करना पड़ता है सर हर दिन। वो इसका मुझे ही बताना है। ओके Yeah, so friends, we are live now. I think we are live now. ठीक है, there was some issue. Good morning, good morning, good morning. Jai Hind, Jai Hind, Jai Hind, all of you. Good to see you all. Yes, कोर्ट केस की बात करेंगे अभी. कोर्ट केस की बात करेंगे अभी. And good morning, Rohit. Jai Hind, good morning, all of you. Good to see you. So आज है 28 February 2023 and I'm here with you all and I can see so many in the live. Aman is there, Rohit, Virat, Sumed, Tirath, Nikki, Yash, Himanshu, Shivani Pandey, Rohitash, Sinechan and Upar Diksha, Sanatani, Rohan Verma, Anurag. Welcome. कल बहुत मजा आया. आई वेंट टू महाराज अग्रसेन कॉलेज. कोई है यहाँ हु वाज देयर इन द लाइव सेशन वी हैड विद द कॉलेज यस्टरडे? कोई है तो मुझे पिंक, मतलब जस्ट शेयर योर थॉट्स हियर इन द लाइव. वी हैड अ ग्रेट सेशन, ऑलमोस्ट 2 hour सेशन देयर विद द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज. बहुत क्वेश्चन पूछे उन्होंने रिलेटेड टू करंट अफेयर्स, पॉलिटिक्स, लाइफ इन द आर्मी, J&K, पंजाब, मोटिवेशन, लीडरशिप, SSB, सब कम्युनिकेशन स्किल, सब पे बात हुई. ठीक है. और देन टुडे मॉर्निंग आई हैव जस्ट कम बैक आफ्टर 50 किलोमीटर scintillating राइड. ठीक है, 50 किलोमीटर्स इन 1 hour and 8 minutes ऑन द सोना रोड. ठीक है. सो नाउ वी विल स्टार्ट द news analysis today and I will start with this news. Not so good news. In fact, little sad that the Agneepath scheme has the case they have lost in the Delhi High Court. So the Delhi High Court has said that this is a policy decision and with wide-ranging implications on nation's health and security, should be decided by bodies best suited to do so. So Delhi High Court has upheld the constitutional validity of Agneepath scheme for recruitment in the armed forces. So all those who are still having some रे ऑफ होप, तिनके का सारा था कि शायद एग्जाम हो जाएगा या जो कॉल लेटर आना था वो कॉल लेटर आ जाएगा, ओवर एज हो गए थे, उनको उम्मीद थी कि शायद हमारी जिंदगी में ये एक किरण आएगी कि शायद हमारे को आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में नौकरी करने का मौका मिलेगा और घर भी बदलेगा और खुद की जिंदगी बदलेगी. उनके लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग है ये. एंड सो द एंटायर थिंग हैज बीन डिसमिस्ड. सो दिस इज व्हाट is on the Agneepath scheme. ठीक है. But so bad luck young boys. मैं तो last time भी मैंने कहा था, start working on upskilling yourself, start working on your education and start looking at other horizons, especially those जो over age हो गए या जिनका who just missed narrowly. Otherwise the scheme is going on now and you can enroll there. ठीक है. Now so उसके बाद this is another news from a court. This is from Supreme Court. Bench says country has assimilated all cautions against keeping it on the boil. So there was a petition in Supreme Court that please rename all places and which have been named after the barbaric invaders. So Supreme Court की आप सुनो judgment, 2-judge bench. They say you want to keep this issue alive and keep the country on the boil. If fingers are pointed at a particular community, you run down a particular section of society. India is a secular state. This is secular foreign. Hinduism is a way of life. Because of that, India has assimilated everybody. Because of that, we are able to live together. This is what Justice Nagaratna, who also disapproved of the petition. The divide and rule policy of British brought about schism in our society. Let us not bring that back. India, that is Bharat, is a secular country. A country cannot remain a prisoner of the past. So a country cannot remain a prisoner of the past.
and India is wedded to the rule of law, secularism, constitutionalism, of which Article 14 stands out as the grand guarantee of both equality and fairness in state action. So ये उन लोगों के लिए है जो 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 है अभी भी who want to who have a different they want to bring back history and now uh, try to rewrite it or try to change names and all. तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट आई है. Then the other news is Australia's deacon said to be the first foreign university to set up India campus. So ये मैंने पहले बताया था आपको, this is the top 300 universities in the world. So this is 266th. इसका रैंक है 266th in the QS World University Rankings and features among the world's top 50 young universities. तो जो young universities है उसमें top 50 में है. Overall इसका जो है 266th है. So they have been given permission to set up a campus in Gujarat. ठीक है. अब जाएंगे हम सीधा to the center page. There also most of the news is related to politics, related to the that one is the central article written Shadows in Punjab by Mr. Prakash Singh. He's one police officer. एक ये है, एक जूलियस रिबेरो हैं. इस तरीके के कुछ चंद पुलिस ऑफिसर्स हैं जिनका नाम मैं कई बार लेता हूं, like I tell you about senior military commanders whose articles must be read. So Mr. Prakash Singh is the one who has been fighting for reforms in the police. He has gone to courts, he has filed a PIL कि reform करो पुलिस को. So his son is now the deputy NSA, whose son is also retired as DGBSF. So father and son both served at DGBSF. Rare चीज, फौज में तो होता है, but paramilitary forces के लिए rare चीज है. So he's writing on Punjab. He's writing on Punjab, and what he says the police is capable of dealing with situation. He's questioning, is the police capable of dealing with situation unfolding in Punjab? Question mark. Certainly yes. And this is what I was telling yesterday also the students when I was interacting with them. कि Punjab police जो है is quite capable of handling this situation. So it is this very police that went hammer and tongs against terrorists in Punjab and vanquished them. They had a clear political direction to wipe out terrorism, and they had excellent police officers who led from the front. The state government of Punjab has unfortunately been fiddling with the police. There have been 4 DGPs in the state since September 2021. तो पिछले 1.5 साल में 4 DGP बदले जा चुके हैं. What functional autonomy they had and what directions were given to them in dealing with such extremist elements is anybody's guess. So he is warning that there are shadows in Punjab of the earlier times when Punjab had militancy. So Punjab police can solve it, but they will need autonomy. And इस बात पर हमेशा मिस्टर प्रकाश सिंह लिखते रहे हैं, टीवी पे बोलते हैं. Everywhere he says कि it starts from the police officers, the district level, थाना level. He says we need massive reforms in police. अगर हमने अपना पुलिस का जो पुलिसिंग है उसको अगर सिटीजन फ्रेंडली करना है, पुलिसिंग को न्यूट्रल बनाना है, पुलिसिंग को अगर पॉलिटिकल मास्टर्स से अलग हटा के काम करना है, पुलिस को सही जो पुलिस का काम है. So that is what he's been. Then there is an editorial on arrest of the Deputy Chief Minister of Delhi. The editor says CBI needs to insulate due process from 2024 politics. So he says CBI needs to, then they have given statistics that now it is given आगे paper में कि mostly it is CBI and ED have mostly been, after the opposition politicians. So he says they must insulate themselves because अगले साल election होना है. It should not appear to be an election thing. At the same time, it is telling Aam Aadmi Party that you need to have better defense. Outrage will not do. You need to have better defense because this was a party that was established on the plank of anti-corruption. Now, the other one is death in the valley. A young boy, Sanjay, who was killed
Kashmiri Pandit who was killed by a terrorist near Pulwama. Achan is the place near Pulwama. He was a security guard. Lekin it is even if the terrorists are trying to create a wedge between Pandits and Muslims, they are not succeeding. They are not succeeding because all Kashmiri political parties have condemned this, and Kashmiri Muslims have come in the front to condemn this particular act and protecting the Hindu brethren. So hope they don't succeed in this agenda of theirs of divide and creating fear. But what Kashmir requires, what the paper editorial says, and which I keep saying, Kashmir requires a healing touch. वो जो घाव है उसके ऊपर मलहम लगाने की जरूरत है और हीलिंग टच की जरूरत है. And unaccountable bureaucracy cannot provide this. ब्यूरोक्रेसी कभी अकाउंटेबल नहीं होती. अभी गवर्नर्स रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, दे आर रनिंग द स्टेट. दे आर नॉट अकाउंटेबल. उन्होंने इलेक्शन लड़ना ही नहीं. वो अपना 2 साल 3 साल करके अपना रिटायरमेंट पे कहीं पे जाके, दे आर नॉट अकाउंटेबल. व्हाइल अ पॉलिटिशियन हु इज अ मिनिस्टर इज अकाउंटेबल. उसको रोज रोस्ट कर सकते हो आप कोयले के ऊपर. सो दे से targeted killing of a Kashmiri Pandit underlines the fragility, the calm in J&K, the unfulfilled need of a healing touch. So they say कि अभी तक healing touch नहीं हुआ है. So an unaccountable bureaucracy cannot provide this. If the people have to play a role in thwarting terrorist designs, they should be empowered through a political process and the emergence of a leadership that is elected by them. So they've been calling, other papers also calling, why are you not holding elections? Let political leaders come and face the brunt and take forward the state in the manner in which they want. Then of course we have Kerala mein communal harmony in Kerala. Kerala is a state which is almost equal representation of Hindus, Christians and Muslims. So it is talking about how Ashutosh Varshney, communal harmony in the state suggests a belief structure that has a mass base, a deep sentiment that polarizing political organizations may not be able to undermine. So केरला में क्या है, जब ओणम आती है सब सेलिब्रेट करते हैं, सब सेलिब्रेट करते हैं. It is not a festival of one particular community. So Kerala highest in literacy, highest literacy. So वहां पे even if people are trying to bring some religious card, not succeeding, good thing. Then cop vigilantes, vigilante cops. ये बहुत जबरदस्त आर्टिकल है निदा काश्नेर का. Links between vigilantes and police legitimize the violence by the latter, but the contract comes apart at times. So she's saying cop vigilante है या vigilante cops है, and when these vigilante groups are in league with police, then that is dangerous. Then that is dangerous. So this is of course talking about the very sad death, burning alive of two young people in Haryana in suspicion of being cow smugglers. So it is on that. Then of course Shehzad Poonawala, Bridge of Solidarity. India's G20 presidency can help bring together an increasingly fragmented world. So world is getting fragmented. We have seen in one of the most important G20 meetings which was held, foreign ministers and central bank governors, that there was not even a joint communique because Russia and China thwarted any attempt in the communique of criticizing Russia for invasion of Ukraine. यही बाली में भी हुआ था. So probably there is a fear now that if the war doesn't stop, so September में जो meet होनी है, जिसके लिए government of India is preparing with such at a grand scale, but we may not even get a joint communique in that also because of the deep divide between the China and Russia on one side and rest of the world on the other side. And India की position थोड़ी सी इसमें गड़बड़ है because India being the host and also president and has abstained, you are aware. But India की position मैंने पूरी की पूरी इस क्लास में समझाई थी, 1 year of Ukraine. And कल मैंने वो टेलीग्राम पे आपको PDF शेयर कर दिया क्लास का. If you have not seen it, please see it. कल मैंने वो PDF शेयर किया है शाम को. और लास्ट की 10-12 स्लाइड्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ SSB में यू नीड एन ओपिनियन, यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ द वर्ल्ड इज शेपिंग अप और इंडिया का क्या स्टांस है. ठीक है, पढ़ लो प्लीज, नोट्स बनाओ.
दिस इज ऑफ कोर्स क्रैश इन ऑनियन प्राइसेस. ये कल परसों एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि a farmer goes, because Maharashtra is the largest producer of onions. He goes to the mandi bhar ke, and finally he was able to make profit of only few rupees after toiling in the field, taking care of his and harvesting the crop and taking it. So farmers on Monday forced the suspension of trading at Lasgaon, India's largest wholesale market for onions, located in Maharashtra's Nasik district, following a crash prices. तो कभी तो ऑनियन रुला देता है. ऑनियन की वजह से, प्याज की कीमत की वजह से सरकारें गिरती देखी है मैंने देश में, और अभी उसकी प्राइस ही नहीं मिल रही, इतना सस्ता हो गया. तो क्या कारण है? सो आर वी एक्सपोर्टिंग? ये देखो, Tukaram Chavan received a check of ₹2 after deduction of expenses for his 500 quintal produce in Sola. 500 क्विंटल इसने बेचा, 500 क्विंटल प्याज, और उसको ₹2 प्रॉफिट हुआ. ठीक है, प्रॉफिट लॉस ही होगा क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल दैट एंड लेबर एंड ऑल. सो दिस इज ऑन ऑनियंस. विल वॉच दिस स्पेस. ठीक है. नाउ वी कम टू नेपाल. We come to Nepal. Every day I am covering Nepal for you. Every day I am coming Nepal for you. And Nepal's ex-Prime Minister Oli's party withdraws support to Prachanda-led coalition. तो ये 2-3 महीने के अंदर अंदर ये सरकार गिरने वाली है. ठीक है. So mass resignations in incumbent government from CP and UML that has 8 ministers including Deputy Prime Minister. तो 8 ministers and Deputy Prime Minister जिस पार्टी का है, जिसने सब आगे बढ़ के आपको सपोर्ट किया, दे आर विड्रॉइंग सपोर्ट. सो अभी आई डोंट नो कितने दिन ये सरकार चलेगी, बिकॉज नेपाल हैज सीन मेनी प्राइम मिनिस्टर्स. Nepal has seen many prime ministers, many governments come and go. I think 5-6 prime ministers they have seen, or governments they have seen in last few years. So Prachanda's party, which contested November 20 parliamentary elections and provincial elections as a partner of 5-party alliance led by Nepali Congress, तो जिसके साथ इलेक्शन लड़ा उनको छोड़ दिया. He fought the election with Nepali Congress, उनको छोड़ दिया, और जो अपोजिशन जिनके खिलाफ इलेक्शन लड़ा उनका पल्ला पकड़ के प्राइम मिनिस्टर बन गए. काफी कुछ ऐसा इंडिया में भी कई स्टेट्स में हो जाता है कि आप किसी के साथ इलेक्शन लड़ते हो और फिर इलेक्शन रिजल्ट के बाद देन पीपल चेंज अलायंसेस. So this is he needs 138 votes in the house to continue as prime minister. 138 उनको votes चाहिए to continue. तो let us see क्या होता है. Then of course Ukraine economy stabilizes after shock of year-long fighting. So एक साल लड़ने के बाद भी यूक्रेन की इकोनॉमी इज स्टेबलाइजिंग. ओके, या दिस इज ये भी कई बार आ जाता है इशू. ये भी कई बार डिबेट में या ग्रुप डिस्कशन में. इंडिया टॉप्स लिस्ट ऑफ ग्लोबल इंटरनेट शटडाउन्स. दिस इज अ रिपोर्ट. 84 internet shutdowns in 2022. So world over, India tops the list of enforced shutdown. So in last year, we had 84 internet shutdowns for the 5th year in row. 5वीं साल लगातार भारत जो है सरे फहरिस्त है. This is by a report by Access Now and Keep It On Coalition. The shutdowns were ordered on various accounts, including protest, conflict, school exam and election. कोई प्रोटेस्ट है, कोई कॉन्फ्रेंस, स्कूल एग्जाम में भी नेट बंद कर देते हैं, एंड इलेक्शंस के लिए. द इंटरनेट वाज शट डाउन 49 times past year in J&K, the highest of any state in the country. But as per the report, they including a string of 16 back-to-back orders for 3-day long shutdowns in January, February in the region. Authorities in Rajasthan imposed shutdown on 12 occasions, followed by 7 occasions in West Bengal. और अभी भी 3-4 दिन के लिए नू एरिया जहां ये these 2 boys who have been killed, उस एरिया में भी इंटरनेट इज शट डाउन, स्पेशली SMS एंड WhatsApp. So this is not something you can be proud of. चलो अभी चलते हैं हिंदू की तरफ. This is the Hindu newspaper, and here they are talking of heavy peaceful polling in Meghalaya and Nagaland, and these 2 states went to polls and exit polls भी आ गए हैं.
We will wait. Second is the time when the results come. These are small states but very important states. Small states but very, very important states. Okay? And this is another. I spoke about Agneepath. Then I spoke about Supreme Court said on that petition कि सारे नाम बदल दो, and what a hard hitting this thing it was to the petitioners. Now again, one Supreme Court wraps government on plea of ED chief's term. So what is happening is that the Enforcement Directorate chief, which has a tenure of 2 years, is elected by the Prime Minister and the leader of opposition, and there's a collegium which decides this. Now this particular person every year is getting a 1 year extension, which is against the service rules. So the Supreme Court has reacted sharply on Monday that it is not concerned with politics when the government claimed that the opposition to the piecemeal tenure extensions granted to Enforcement Director S.K. Mishra is because ongoing investigations are going on. A bench has specifically said there will be no further extension for. So it was said that he should not get any further extension. Let's a new person be elected or selected by the government, and whatever is the. But so Supreme Court has criticized that part. Now we come to the center page. Is on, of course, there's a very nice article by Mr. Shashi Tharoor. He speaks well, he writes well. First time I heard was in 1996 when he was one of the top diplomats in UN. He missed becoming UN Secretary General by very, very close contest many, many years back. So he was in the UN. Most of his career was in the United Nations. And so he's writing Making a Name with Anomastics. So it's nice English reading. Then, of course, we come to subaltern secular. The Congress will have to build a campaign aligned to its new vision. So this is on the plenary session, 85th plenary session of the Indian National Congress, which was held in Raipur. So they say that the paper says that Congress will have to build a campaign aligned to the vision that they have given, the new vision they have given for the nation in this. They have to build a campaign. Then, of course, this is on Australian girls winning the women's cricket in almost a one-sided kind of contest. Okay, this is on relatively few tobacco users in southern states. So this is on the use of tobacco. And मैं काफी हैरान हूँ. ये सोशल इशू भी है, इकोनॉमिक इशू भी है, और यंग जनरेशन को मैं हर बार ये बात कहता हूँ. Why are people smoking so much? When we know smoking causes cancer, we know how smoking affects your lungs, your life, and everything. And it shows कि southern states में कम लोग सिगरेट पीते हैं और बीड़ी और तंबाकू का सेवन करते हैं. Northern states में ज़्यादा है. और ये चीज़ is very, very prevalent in all northern states. And when I go to my village in Haryana, I feel everybody is on a hookah. Young generation also, middle generation, old generation. Hookah has become a place where the moment 5 people get together, they say, let's have a hookah. Hookah and chai. Hookah and chai is playing merry hell with their health. So not good. It also shows male, female, how many they smoke, BD and all. I just want to caution, I hope mere bacha party jo hai, people who follow me, young boys and girls, please don't smoke. Okay? Otherwise, you can never be a good athlete, and your lungs will not be able to take the smoke. Okay? Now, this is on the New START treaty on pause. This is, of course, Barack Obama and Dmitry Medvedev, who was the Russian president. They signed this treaty in 2010. तो इस treaty का भी बचे हुए थे 26 तक थी, and Putin has withdrawn unilaterally from this treaty. Signed in 2010 by Barack Obama and Russian President Dmitry Medvedev, and came into force in February 2011. February तो 10 साल से ज़्यादा की treaty थी, and he has withdrawn. So what is the meaning of this, and why this saber rattling and creating this thing by Putin? We'll have to wait and watch.
but communication between Russia and America is broken down. Such treaties are good. Such treaties are good कि इस बहाने बातचीत होती है. Now this is on the science and technology. Hindu covers very well. And science technology, please पढ़ना चाहिए. AI, chat GPT, cyber warfare, cyber attacks, UPI पेमेंट सिस्टम कैसे बढ़ रहा है, डिजिटल करेंसी, क्रिप्टो करेंसी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ये सब पढ़ना चाहिए, प्लीज पढ़ना चाहिए, क्योंकि कुछ भी आ सकता है. And this is on organ on a chip, a tech which mimics disease systems and laboratory conditions. Researchers and biomedical companies, the West have started to build assemblies of different organ chips. These chips are small devices containing human cells that mimic the environment in human organs, which allow them to be used to test new drugs. So, एक चीज मैं बता दूं, the future, your future, will be decided by the biotech industry and the edtech industry. तो बायोटेक इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा काम हो रहा है. I could not have imagined in my life to see the improvement in the health sector and in the medical sector and biotechnology. It is really it defies logic the way biotech is moving. ठीक है, तो ये this is what you all know. Harari also keeps telling in his books. And then of course today is the National Science Day. मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट हूँ, बट आई लव साइंस एंड साइंटिस्ट. ठीक है, so today is National Science Day. Anyone can tell me why it is celebrated? Anyone who can tell me why is National Science Day celebrated? And it is because of whom? सबके जवाब दूंगा लास्ट में. प्लीज कीप योर क्वेश्चंस विद यू. आई विल आंसर एवरी क्वेश्चन. ठीक है, so this is celebrated because on this day in 1928, C.V. Raman, Nobel awarded, first Indian to get a Nobel Prize. C.V. Raman announced the discovery of an optical effect called the Raman effect. तो डॉक्टर C.V. Raman ने आज के दिन जो है ये अनाउंस किया था. So that is why it is the Science Day. Then you have Know Your English, Word of the Day. मजेदार है, थोड़ा लाइफ चेंज कर लो, इंग्लिश वगैरह पे जोर दो. And this is of course I had covered in the beginning. Agneepath scheme has been totally turned down by the Delhi High Court. Supreme Court had said कि Delhi High Court to hear all the petitions, so they have turned it down. And मुझे लग भी रहा था ये turn down होगा. ठीक है. This is of course a joint statement at G20 meeting unlikely. So this is what I was telling you, that there is a chance. This is written by Suhasini Heather. Suhasini Heather writes on international relations, foreign policy, and say a senior journalist, right, for the Hindu. So the growing confrontation between the West and the Russian-China combine is overshadowing government's plans for G20 and the Raisina dialogue. तो रायसेना डायलॉग है 4 और 5 तारीख को. रायसेना इज द प्लेस जहाँ राष्ट्रपति भवन है. तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज करता है. ORF does it and MEA is fully involved in it. So उसमें Italian Prime Minister is the chief guest at the Raisina dialogue. So they are fearing that because ये finance ministers की meeting में नहीं हुआ, तो हो सकता है कि ये main जो summit होगी उसमें भी शायद ना हो. This is of course the J&K killing. ADGP says the new terror organization का नाम है the Resistance Front. ये नाम बदल देते हैं, ये नाम जैसे आईडी बदलते हैं वैसे नाम बदल देते हैं. It is a front for लश्कर ए तौयबा. इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. There are only लश्कर या जैश. लश्कर is a more potent terror organization. उनका काम होगा ये. 1,300-year-old Buddhist stupa found in Odisha's Jajpur. Jajpur में ये है. And then of course we have this China blasts US agencies COVID-19 lab leak report. So this is continuously on. China doesn't want any investigation in how the COVID started. China doesn't want any investigation. They don't own up anything. And this is
रेजिडेंट्स ऑफ वेस्ट बैंक काउंट कॉस्ट ऑफ इजरायली रेप्रिसल्स, ये मैंने कल कवर किया था। पैलेस्टीन और इजराइल के रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए के बीच में जॉर्डन में मुलाकात हो गई है, एंड देव सेड कि ठीक है, वी विल स्टे अवे फ्रॉम वायलेंस, तो लेट अस वेट एंड वॉच। Okay, now we come. Nothing much in this paper. I'll just cover this. This is, of course, the 2024 election caught between Math and Modi. This is 2024 is not 2004. Even if Congress builds a large opposition alliance, there are 3 reasons defeating BJP nationally will be tough call. Yeah, Asim Ali ka article hai. Then, this is what I want to tell you about Mr. Banga. Mr. Banga, Ajay Banga, who has been made the president of World Bank by Joe Biden. इनकी लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। इनके ऊपर मैं एक YouTube वीडियो बनाऊंगा। कल मैं उनका इंटरव्यू देख रहा था, तो मुझे लगा उन्होंने कई बातें जो बोली हैं वो आप और मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उनकी व्हाट आर हिज क्वालिटीज, उनकी पर्सनल क्वालिटीज क्या उनके बारे में है। एंड दिस इज ऑफ कोर्स द अनदर न्यूज़पेपर टेलिंग द गवर्नमेंट प्लीज होल्ड इलेक्शंस इन J&K। उसमें इलेक्शन क्यों नहीं करा रहे हो आप? The response to targeted killings can't only be security focused. Politics is part of the solution. So politics is part of the solution, and in democracy, people need their representatives to be there. तभी काम इनके होते हैं और तभी जो है इसीलिए सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। The bloodbath on the Adani group continues. And कमाल की बात क्या है, such a big organization, second richest or third richest person in the world, has come down now below 30, but they employ only 23,000 people. Tata's employs lakhs. Tata's, Reliance, Wipro, Infosys, ये है बड़े employer. Of course, सरकारी महकमे में जाओ तो biggest is armed forces, then railways. So I'm surprised that how was this entire conglomerate built if they have only 23,000 employees. तो ये कमाल की बात है। So they have gone down to 2/3 in 23 sessions. 12.4 lakh crore wiped out since publication of Hindenburg report. ये कितने जीरो लगेंगे? 12.5 लाख करोड़ लॉस हो गया है। एंड LIC is taken a hit very badly. So and it's a government company, और इसमें सब वो पॉलिसी होल्डर हैं जिन्होंने बिल्कुल ही लोअर मिडिल क्लास और लोअर अप वो लोग हैं जो LIC की पॉलिसीज ले रखे हैं जिन्होंने, एंड दे आर गोइंग टू सफर। अ मंथ ऑन अडानी ड्रॉप फ्रॉम 3rd to 38th, तीसरा रिचेस्ट बंदे से 38। दैट मीन्स द एंटायर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंटायर एथिक्स एंड the company that was built, that one small report has a catastrophic effect. And now I also believe that there is another billionaire, Indian billionaire, who is on the docks. उसके बारे में भी ये भी आ रहा है, he will not be able to repay debts, and that is Mr. Anil Agarwal of the Vedanta Group. तो अगली खबर जो है वेदांता ग्रुप के बारे में आने वाली है। सो कहीं ना कहीं हमें सोचना चाहिए कि ऐसा क्या है, why are rich people other than some solid companies like Tata's and all, don't have the correct ethics, and then they borrow so much of money on inflated share prices. ये आपको समझना चाहिए कि पैसा कैसे बैंक से लेते हैं। बैंक को बोलते हैं मेरा जो ये पेन है ये 1000 रुपए का है, एंड बैंक बोलता अच्छा 1000 का है, क्या मुझे 50% प्रॉफिट पैसा दे दो। अच्छा तो 500 का शेयर लगा के पैसा दे दिया बैंक से, हजारों करोड़ रुपए। हमारे ही बैंक नहीं, दुनिया भर से, और एक्चुअल वैल्यू इसकी एक्चुअल वैल्यू शायद 100 रुपए, बट आपने दिखाया देखो जी 1000 रुपए में है मेरा और मैं 500 रुपए में मांग रहा हूं। दैट दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, दिस इज व्हाट इज इन्फ्लेशन ऑफ वैल्यू। यही हाइडेनबर्ग ने बोला जी 85% कम है इसकी वैल्यू शेयर्स की, तो इट हैज फॉलन 85%। दिस मैं भी इतना नहीं समझता हूं शेयर मार्केट और इकोनॉमिक्स, बट दिस इज व्हाट माय रीडिंग गोज, Then El Nino fears raise food inflation worry. इस पे मैं एक लूंगा क्लास, एल नीनो और एल नीना पे, ला नीना एंड एल नीनो इन पे लेंगे क्लास, ठीक है, बात करूंगा। ओके,
I think now I will take your questions. I will take your questions and discuss with you. एक तो प्लीज लाइक द सेशन. बहुत मेहनत करता हूं मैं आप लोगों को ये लाइव सेशन देने के लिए, और जिससे कि आपका लव स्टार्ट हो करंट अफेयर्स के लिए. मेरा पूरा पर्पस ये है. ठीक है. एंड यू कैन आस्क मी एनी क्वेश्चंस उसके लिए. चलो तो मैं क्वेश्चन लेता हूं अभी पीछे से. या टुडेज बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सीवी रामन सर. ओके ओके, ऊपर से लूंगा, चिंता मत करो. जय हिंद जहां से स्टार्ट होता है. जय हिंद से जय हिंद हो गया कईयों के साथ. ओके. ओवरेज ये सोचना चाहिए था. इट्स गॉन नाउ. नाउ इट्स गॉन. पेंडिंग भर्ती को करा देना चाहिए था. एनसीसी मेरा. यस, दिस इवन आई हैव बीन स्पीकिंग सो मच ऑन दिस स्कीम. मैंने लिखा भी है, बोला भी है बहुत ओपनली कि ये एटलीस्ट उनको तो ले लेते जो प्रोसेस में थे, जो गवर्नमेंट नोटिफिकेशन. उनको ये बोलते रहे हो जाएगा हो जाएगा. किसी ने नहीं बोला नहीं होगा. नहीं तो ये पढ़ लेते, कोई और नौकरी की ट्राई कर लेते. टीए इज होपफुल ओवर. ऑल द बेस्ट. टीए में बहुत कम वैकेंसीज होती है. How is the G20 presidency awarded? Anyone? This is a question asked by Raj Burande. देखो, G20 प्रेसिडेंसी बहुत सिंपल है. ये अवॉर्डेड नहीं होती है. ये आपके टर्न में आएगी. ये पहले डिसाइडेड है. अभी मैं बता दूं अगले 5 कौन होने हैं प्रेसिडेंट. अगले 5 कंट्रीज कौन है, सब डिसाइडेड है. तो इन्होंने क्या किया, मेरी क्लास है G20 पे, तो जो G20 कंट्रीज इनको ग्रुप्स में बांटा हुआ है, ABCD. तो ग्रुप्स की प्रेसिडेंसी ABCD ऐसे चलती है. विद इन ग्रुप्स इट इज अल्फाबेटिक. इट इज जस्ट चांस. ये बाई चांस है कि ये इस साल हमारे पास है. नेक्स्ट ईयर साउथ अफ्रीका के पास है. पिछले साल इंडोनेशिया के पास थी. तो कोई इसमें कोई ड्रॉ ऑफ लक नहीं है. ड्रॉ ऑफ लक है. कोई किसी ने सेलेक्ट नहीं किया कि यूएन में बैठे लोग यार इंडिया को दे दो, या उसको दे दो, इंडोनेशिया को दे दो, मलेशिया को दे दो, और इजिप्ट को दे दो. So it has come in that order. So understand what is G20, what are the groups in G20, and और groups भी ऐसे बनाए हुए, mix करके group बनाए हुए. So this is going on for quite some time. Shiv Dayal Yadav, why is not India member of veto power? Why? Why means because we are not. Please give me everyday homework. अच्छा, मैं तुम्हें होमवर्क देना शुरू करूं तो पढ़ लो. नेपाल नेक्स्ट पार्टी हैव प्रो इंडियन सेंटिमेंट. ओके, लेट्स सी. अच्छा, बीच में एड्स आ गई. सर प्रचंडा गवर्नमेंट मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट. अभी देखते हैं मेजॉरिटी है या नहीं है. नीरज पांडे, आई डोंट थिंक. आप जो बोल रहे हो कैन वी विन आवर पेंडिंग एग्जाम. I have no idea of this. जाना चाहिए नहीं है. India needs an anti-smoking zone to avoid pollution of air. Okay. आजकल तो most government offices, airports, railway stations, trains are non-smoking. Powerful thing, sir. Today's science day, the science has become life comfortable. भाई आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव करो. सूर्या, प्लीज इंप्रूव कर लो. मैं आप बार आप लोगों को बताता हूँ. सो एंड फॉर दैट यू विल हैव टू ज्वाइन द कम्युनिकेशन कोर्स. BOCC is 3 months. BOCC is 3 months कोर्स. 3 महीने का कोर्स है. बट मैं सोच रहा हूँ इसको 6 मंथ एक्सटेंड कर दूं जो कमजोर है. 6 मंथ्स एक्सटेंड कर दूं जो कमजोर है. बिकॉज जो हिंदी मीडियम में है, आपको 6 महीने चाहिए अच्छे से इंग्लिश पकड़ने के लिए. एयरफोर्स इज बिग टिकट.
आपने देख लिया कितनी कॉस्ट है एक एयरक्राफ्ट की। सो हमारे 42 स्क्वाड्रन होने चाहिए, वी आर डाउन टू 32 स्क्वाड्रन, सो 10 स्क्वाड्रन लेस है। Pradeep Pathani, no, chatbot will be. Somebody said 23,000. What is 23,000? I don't know. Kamya Tiwari, if you want help for SSB preparation, then you can join the BOAC course. Those who want personality development and English speaking can join the BOCC course. Major reason behind Adani is loss. It is all over. There's so many reasons. So many reasons. There are shell companies and no transparency and inflated share markets and poor corporate practices. ठीक है, and crony capitalism. Why LIC invested? That is what should be investigated. Who are the people who took decisions in LIC to invest 30,000 crore rupees to them? They should be investigated and asked कि भाई आपने क्यों पैसा दिया है इस ग्रुप को? बाकी नहीं दे रहे थे, म्यूचुअल फंड्स नहीं डाल रहे थे पैसा. They knew कि it's inflated, but LIC was giving. नेक्स्ट स्पेशल क्लास लेता हूं अभी. जियो पॉलिटिक्स एंड डिप्लोमेसी को हम अपनी हैबिट्स बना सकते हैं. हैबिट नहीं होती, हैबिट होती ब्रश करना, नहाना धोना, रनिंग करना. हैबिट नहीं, हॉबी. आज शायद आप हॉबी पूछना चाहते हो मनीष. हॉबी बना सकते हो, हैबिट नहीं, हॉबी. No, government doesn't want to close NCC. In fact, they want to have more NCC, which is a good step. ये प्राइम मिनिस्टर का बहुत इनिशिएटिव है पिछले टेन्योर से कि we must have more NCC cadets. Brothers research. I want to prepare for CDS. तो prepare करो ना फिर CDS के लिए. Yeah, I met. Naturally, I would have met जनरल शिवाने, जनरल पांडे, सभी को. उससे पहले जनरल रावत. Okay, so I'll just share the Telegram link. Here. And you can then join the Telegram channel, and that is where we will start interacting with you all. And जो भी आपके doubts हैं, queries हैं, you can put it in the Telegram group. ये है जिसने नहीं join किया हुआ है. We have crossed almost 15,000 plus subscribers on this Telegram group. 15,200 or something. Okay. Ashok Reddy, good morning, sir. I tend to get very angry when something is not working, going as I wanted to. Someone saying something I don't like. What can I do? Curb this behavior is taking a toll. See, anger management is actually eating you away. ठीक है? So anger management के लिए best है start becoming tolerant, start becoming cool, start ignoring things and take life little chill. थोड़ा हंसा करो, थोड़ा मस्ती किया करो, डांस ज्वाइन करो, फिजिकल फिटनेस करो, and don't be so possessed कि ये होना चाहिए काम. ऐसे नहीं होता लाइफ में. थोड़ा सा चिल करो, थोड़ा कूल रहो. ठीक है. So can I join EME through NDA? ना, EME is only through you have to parachute. EME नहीं मिलता किसी को. कैसा सवाल पूछते हो आप लोग, फिर मैं रोस्ट करूंगा आपको. भाई पूरी फौज सबके लिए है. शॉर्ट सर्विस, IMA, OTA, NDA, कोई फर्क नहीं है. जिस दिन स्टार लगे EME भी जाता है, पैरा SF भी जाता है. कोई फर्क नहीं है. मतलब
कहीं से कोई कहीं भी जा सकता है, शॉर्ट सर्विस पैरा एसएफ जा सकता है, तुम ईएमई जा सकते हो। ये पता नहीं इतना आप लोग पूछते हो, ईएमई जाना चले आना, ईएमई कौन रोक रहा है? बट यू हैव टू बी ए टेक्निकल ग्रेजुएट फ्रॉम एनडीए, आर्ट्स का नहीं जा सकता। भाई शिवदयाल, आप तो बीओसीसी कोर्स कर लो, इस इंग्लिश के साथ बहुत मुश्किल है। सर जी, कुकिंग इज गुड हॉबीज और हैबिट। प्लीज प्लीज कुछ इंप्रूव योर इंग्लिश, मोस्ट ऑफ यू, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है? अगर सच में आपके जज्बा है सच में कि मैंने बनना है, ऑफिसर बनना है, तो ठीक है, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, यू हैव टू वर्क ऑन दिस, ठीक है? चलो चलो, ऑल द बेस्ट। सो वंस अगेन हैव अ ग्रेट डे, हैव अ ग्रेट डे। एंड थोड़ा बहुत तो मैं तुम लोगों को रोस्ट करूंगा बीच बीच में, एंड सही एडवाइस भी दूंगा बिंदास स्टाइल से। एंड वी आर गोइंग टू बी कंटिन्यूइंग विद स्पेशल क्लासेस। कल मैंने पीडीएफ शेयर कर दिया था, आपने देख लिया होगा। सनातनी देशभक्त कट्टर सर, कैन शॉर्ट हाइट जॉइन द पैरा इन ऑलरेडी इन इंडियन आर्मी, माय फ्रेंड हाइट। अरे कोई कहीं जा सकता है, ठीक है? शॉर्ट हाइट तो पैरा में चाहिए हमें, वो लंबे लंबे इंसान, किसने बोल दिया आपको? चलो, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट